Hello students, today in this video I am going to talk about the gravitational potential due to a solid sphere. Gravitational potential due to solid sphere. So if you haven't watched my previous video of spherical shell, please watch that. बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं, ईजी हो जाता है समझाने में. अगर आपने वो समझा होगा तो ये ईजी लगेगा. ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में क्या है, अब जो स्फेरिकल बॉडी थी पहले वो शेल की फॉर्म में हम ले रहे थे. ठीक है, अब उसमें क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो हॉलो है. यहाँ पे जो स्फीयर है वो सॉलिड है इनसाइड. ठीक है, लेट मी टेक दिस स्फीयर विद द सेंटर ओ. ओके, एंड इसके लिए भी हम तीन केसेस, पोटेंशियल 3 केसेस में कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, देन ऑन द surface, and then inside the sphere. Okay, so if you have to calculate potential at a point outside the sphere, say P, which is at a distance of r. Okay, and this sphere I have taken the radius as capital R. Okay, so for the potential at P, we have to consider that this sphere is made up of so many spherical shells. Okay, so we imagine the sphere, imagine the sphere to consist of a number of spherical shells. Okay, so we consider here there are number of spherical shell in this sphere and of different masses. Okay, say they have masses, suppose m1, m2, m3 and so on. Okay, etc. So we have to calculate this. Okay, the potential which is at r distance, and this is greater than the r radius of the sphere. Okay, so we see that the gravitational potential at P, okay, due to each spherical shell is equal to minus g over r and mass of the spherical shell. Okay, and the potential at P due to all the shells constituting the sphere will be, that is due to the whole solid sphere, will be equal to the V is equal to m1 plus m2 plus m3 and so on. Okay, upon g over r. Okay, because potential is a scalar quantity, we can add like this. Okay, and clearly the sum of the masses of all these terms, m1 plus m2 plus m3 and so on, this is nothing but it is equal to the capital M, that is mass of the solid sphere. Okay, so I can replace this term by capital M g over r. This is the potential, okay, at a point outside this spherical body, solid body. Okay, and this potential is in this, its sphere behaves as though the mass is concentrated at its center. Okay, because it has the same. So we have considered here like the spherical shells. There are so many spherical shells which are concentric. Okay, like this. Okay, now let's move on to the case of potential on the surface of sphere. Okay, so for the case of potential on the surface of sphere, what you have to do is you have to take the distance equal to the radius. Okay, see in this figure what
that P point was outside. Okay, so if you have to calculate at the surface, on the surface of this solid sphere, so the point is P on the surface. Okay, so this distance OP is nothing but the R. So now here R becomes capital R. Okay, so in the case for the potential on the surface of solid sphere, the small r is equal to capital R, and the potential will be minus gm over capital R. Okay, so in this case I should have taken this small r because the small r for the distance. Okay, so here it will be small r. Okay, otherwise it will be difficult to differentiate between this part and the first part. Okay, because in second part we are taking small r equal to capital R, and the relation will become v is equal to minus gm over capital R. But in first case it will be minus gm over small r. Okay, so please see this, please make a change here. Okay, by mistake I have done. So for the point now inside, so at a point inside the sphere, inside the sphere, we first of all we take one big circle. Okay, it's not easy to draw freehand drawing here, but I am trying to make something like sphere. Okay, so this is sphere and it has a center O. Okay, and say let's suppose this is my point inside. Okay, and let it be at a distance of R. So I have made one spherical body. Okay, one spherical shell at this point. Okay, now in this case, what the point, this R is less than capital R. Okay, you know here this R is the radius capital R. The point where we have to find the potential is less than the radius of the sphere. Okay, now this, in this case, the solid sphere can be imagined to be made up of an inner solid sphere of the radius R, surrounded by number of concentric spherical shells, or number of spherical shells which are concentric to it. Okay, number of concentric spherical shell, and having radii ranging from small r to capital R. Okay, so we have considered here that this solid sphere is made up of that the solid sphere can be imagined to be made up of an inner solid sphere, okay, of radius R, surrounded by a number of concentric spherical shell having radii ranging from R to small r. So in this case I have to find the potential at this point. Okay, and we have considered here this as the solid sphere. Okay, inner solid sphere of radius R is this, the shaded portion, which is surrounded by a number of spherical shell. Okay, here there are number of concentric spherical shell outside this. Okay, having the radii ranging from this R to capital R. Lower is this, okay,
and upper will be equal to this. Okay, so I hope it's clear. Now what you have to do is the potential at this point P. Okay, now the potential at the point P will be equal to two terms here. Okay, first of all it will be equal to the sum of the potential at P due to the inner solid sphere. Okay, potential at P due to inner solid sphere, and second contribution will be of the spherical shells, concentric cell, okay, which are outside. So potential due to spherical shell, due to spherical shells outside it. Okay, these two terms we have to find out here. So for the first part, the inner solid sphere. Okay, so for inner solid sphere, the point P lies on the surface of the inner solid sphere of the radius r, and inside all the spherical shell, okay, will have the radius greater than r. Okay, if we take here this sphere, okay, this P which has the point P and this has the radius r, if I take this solid sphere, okay, the points which are lying inside to this will have the radii of course less than r. Okay, so every point if we consider inside this part, okay, to this point will be the greater than, okay, that will be considered as outside that point, outside that sphere. So to calculate the potential at P due to inner solid sphere at R, it will be equal to, the potential will be equal to minus the mass of the sphere multiplied by G over R. Okay, and this mass is nothing but the volume multiplied by density. Okay, and volume of sphere 4 pi 3 pi r cube, and density is rho G over R. So R is, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस 4 बाई 3 पाई R square rho G. This you will get. Now what is this part? Now this is now the potential due to the inner solid sphere. Okay, now to find out the potential due to the spherical shell which are outside this, for this you have to consider the potential at P due to all the outer shell. Let us consider one such shell. Okay, we consider in this one such shell. Okay, let it be of the radius x here. Okay, let it be of radius x here, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमने x मान लिया, और ये इसकी जो ये थिकनेस है इसको हम मान रहे हैं dx है. ठीक है, हमने अब देखो इस जो ये हमने ये इनर लिया था ना एक सॉलिड स्फीयर, उसके बाहर का देखना है. तो उसके बाहर के लिए देखने के लिए हमने देखा कि नंबर ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, तो उसके लिए हमने एक शेल कंसिडर कर लिया जिसका जो रेडियाई है वो x के इक्वल है. ठीक है, और उसकी थिकनेस हमने dx है. अब उस शेल के लिए हम निकालेंगे. ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे कि इसका रेडियस है x और इसकी थिकनेस है dx. ठीक है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम लिखना हो इस पर्टिकुलर शेल का, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस. ओके, एंड एरिया इज नथिंग बट 4 पाई x स्क्वायर. ठीक है, x है ना उसका रेडियस, और थिकनेस क्या है, dx है. तो ये उसके आगे वॉल्यूम. ठीक है, सो वॉल्यूम आ गई तो अब मास भी निकाल सकते हो. मास क्या होता है, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो इट विल बी 4 पाई x स्क्वायर dx multiplied by density. Okay, so since the potential at a point inside a shell is the same as that at a point on its surface, okay, so the potential at P due to this shell will be equal to 4 pi x square dx rho
over x multiplied by g. This will be the potential. Okay, now this is dV due to a particular shell. Okay, so now you have to find out the potential due to all these type of rings, all the shells. So for that we are taking the limit from R to capital R. Okay, so taking the limits and taking out these things as common, 4 pi rho g, these are all are constants here. Okay, if I cancel x, so it will be x dx, and limits will be from R to capital R, so it will be x dx will be x square by 2. Okay, so I can write it as minus 4 pi rho g x square by 2 r. Okay, or it can be written as 4g r square by 2 minus r square. Okay, I can write it as this. Now what you have to do is multiply and divide this term by 3. Okay, I am writing this term again. So this is v is nothing but minus 4 pi rho g r square minus r square over 2. Okay, so this you have to multiply and divide by 3. So what you will get is 4 pi rho g 3 r square minus r square over 2 है ना, यहाँ पे इसके नीचे था, यहाँ पे आ गया 3 एक और. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल. Okay, now multiply this 3 inside, so it will be 4 by 3 pi rho g 3 r square minus 3 r square over 2. Okay, now this is the potential due to the spherical shell. Okay, and let it be equation number 2. and ये जो हमने यहाँ पे निकाला था पोटेंशियल है ना, जो हमने इनर सॉलिड स्फीयर का लिया था, इसको हम 1 कर देते हैं. अब टोटल पोटेंशियल P पे हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ओके, so it will get the potential at P due to the whole solid sphere. Okay, potential at P due to whole solid sphere. Okay, and this is equal to the potential at P due to the inner solid sphere plus potential at P due to all the spherical shells. Okay, and this is equal to minus 4 by 3 pi r cube rho g and minus 4 by 3 pi rho g 3 r square minus 3 r square over 2. Okay, now what you have to do is take some terms common. 4 by 3 pi rho g, ये टर्म कॉमन ले सकते हैं, और आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे r स्क्वायर है. ठीक है, हाँ, तो ये r स्क्वायर. ठीक है, चेक कर लेते हैं r स्क्वायर, ये हाँ r स्क्वायर है. ठीक है, सो r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 r स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 r स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, 1 माइनस 3 बाय 2 को सॉल्व करो एलसीएम लेकर, सो ये आपके पास माइनस 1 बाय 2 बनेगा, है ना. तो ये जो टर्म है आपके पास आएगी माइनस 4 बाय 3 पाई रो जी एंड 3 r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 2, इसको उठा भी लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे लिख दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय r क्यूब. ओके, सो व्हाट you will get minus 4 by 3 pi rho g r cube 3 r square minus r square upon 2 r cube. Okay, now in this case the term 4 by 3
this term here 4/3 pi r square multiply by rho, ये जो यहाँ पे टर्म दिख रही है आपको 4/3 pi rho एंड दिस r क्यूब, ये टर्म है g छोड़कर, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है? दिस इज नथिंग बट मास, बिकॉज मास इज वॉल्यूम, this is the volume of the sphere, this is the volume multiplied by density is mass. So I can write here minus mg 3r square minus r square upon 2r cube. So this you will get the formula for the potential, okay, inside at a point. Okay, now if I consider a case that to find the potential at the center of sphere, at the center of sphere what will happen? This r will be equal to 0. Okay, so at the center of the sphere, if I put this r equal to 0, then I will be left with minus mg 3r over 2r cube. ओके, सो r एंड इसमें से एक r कैंसिल होगा, तो ये बनेगा माइनस mg ओवर 2r स्क्वायर, 3 भी है साथ में, हाँ ठीक है, तो 3/2 mg ओवर r स्क्वायर स्क्वायर अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर था, ऊपर आर स्क्वायर ओवर आर क्यूब था, ठीक है, तो नीचे एक टर्म रह जाएगी आर की. ओके, सॉरी, सो ये आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा -3/2 gm ओवर आर. ओके, सो दिस पोटेंशियल इज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड व्हाट वी फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस, इट इज -gm ओवर आर. सो यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन आता है कि जो पोटेंशियल सरफेस पे है, ओके, और जो पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर पे है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स क्या है? इट इज द 3/2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. ओके, तो मतलब अगर आप प्लॉट करो यहाँ पे भी, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो है आपको ये केस में मिलेगी, -3/2 जो है बिल्कुल सेंटर पे है जो आपका, ठीक है. तो ये आपका कर्व बिल्कुल ही इस तरह बनेगा. यहाँ पे जो है ये आप सेंटर ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हो, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपको. ओके, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये सरफेस पे है जो डिस्टेंस r पे है, ठीक है. इसको मैं ऐसे पूरा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा बना सकते हो, ऐसे स्फीयर बना के, ठीक है. ये r होगा, ये r बनाना है आपको, ठीक है, ये r और ये r है, तो स्फीयर थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए था, ये ऐसे बनेगा. ओके, प्लीज़, ये चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी यहाँ बतानी, तो ड्राइंग ऐसे ख़राब सी हो गई, ठीक है. तो ये r जो है ये इसके r, ये हमने, ठीक है, सरफेस पे ले रहे हैं, एक हम पॉइंट ले रहे हैं सेंटर पे, एक हम पॉइंट ले रहे हैं सरफेस पे, और एक मैं यहाँ पे बताऊंगी जो इनसाइड होगा स्फीयर का. तो हमने तीनों निकाल लिए हैं कि सेंटर पे जो है पोटेंशियल वो है -3/2 gm ओवर कैपिटल R. इनसाइड के लिए है, इनसाइड के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल आया था, बड़ी सारी टर्म आई थी, -gm ओवर 2r क्यूब 3r स्क्वायर ओवर -r स्क्वायर, ये आया था. और सरफेस पे -gm ओवर r, ठीक है. तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर आ रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है ना. और जैसे हम बाहर अगर हम देखें, सरफेस से बाहर देखें, यहाँ पे देखें, तो ये क्या है, -gm ओवर स्मॉल r के इक्वल है पोटेंशियल, ठीक है. तो जैसे जैसे r की वैल्यू, ये r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इन्फिनिट होती जाएगी, तो पोटेंशियल भी 0 को अप्रोच करेगा. ओके, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आती है? सेंटर ऑफ द स्फीयर आती है. ओके,
So I hope it's clear. If you are having any doubts, you can put it in the comment section. That's all for today. Thank you and have a nice day.